Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to my podcast channel Everything is Poddable with Fatemah Abbas. Today I have a very special guest with me who is not just my best friend but a beautiful performer and even a more beautiful Kathak dancer जिनकी बहुत छोटी सी जिंदगी में already 14 साल का experience हो चुका है. Please help me welcome my best friend Momina Farooq. Momina. Hello. Hello. How are you feeling? I'm feeling excited. How's the coffee? The coffee is good. हम प्रोडक्शन को ए देंगी फिर आप इस चीज के ऊपर. Definitely. Tell me, Mirjan, so how are you feeling? This is your first podcast, right? Yes. Have you ever given interviews with anyone? I have given an interview. Yeah. I have given a couple of interviews. One recent interview that I gave was for a documentary. Amazing. And when is that coming out? I don't know. You don't know? Soon, I think in a couple of months, perhaps. अभी तो उसकी काफी चीजें चलनी है. Well, it's a grant project. Well, this podcast is going to come out in a couple of days. So rest assured, ठीक है? तो मोमिना, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में अभी बताया and मैंने ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दिया because I want you to tell your story. 14 years का experience and you are just so young. So walk me through your journey. कैसे start किया? क्या background है? So I've loved to dance since I was a 4-year-old kid. Right. मुझे डांस का बहुत शौक था पर हमारी सोसाइटी में यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है तो वहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग बचपन से नहीं दी जाती है एंड ऑब्वियसली आफ्टर ज़िया पीरियड ऑल्सो इतनी बड़ी हमारी हिस्ट्री उससे पहले भुट्टो था तो वहाँ तो काफ़ी क्लासिकल आर्ट्स को और म्यूजिक को सपोर्ट किया जाता था साउथ एशियन क्लासिकल आर्ट्स को पर आफ्टर फिर ज़िया पीरियड आया उसमें it almost eradicated our dance culture, you know, हमारे classical arts जो भी सारे थे तो हम उसके बाद की पैदाइश हैं. True. तो उसके बाद जो भी हमें टीवी पे आता था as children, Bollywood, you know, pop music, anyone who wanted to dance or move, जिसकी भी दिल में वो एक उमंग होती है ना झूमने की तो वो बॉलीवुड और सारे जो टीवी पे आते थे चीजें उनके ऊपर डांस करते थे. Likewise, I would do the same as a 4-year-old kid. But जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे समझ आता गया कि you know I wanted to perform, I wanted to dance and I wanted to देखे ना एक performance एक उसका purpose होता है मकसद होता है जब आप डांस करते हो to connect with other human beings. Beautiful. Exactly. यहाँ पे और कोई उस तरह की facilities ही नहीं है. तो मुझे ये भी था कि because I love to dance, I wanted to know the subject in depth. Right. You know? Right. और किसी भी चीज को अगर आप सीखना चाहते हो तो उसकी क्लासिकल आर्ट्स या उसकी जो ग्राउंडिंग होती है उसमें जाना इज अ मस्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लर्निंग इंग्लिश तो आप शेक्सपियर पढ़ाते हो. True. उसमें पढ़ाते हो ना लिटरेचर. उसमें आप तो लाइकवाइज इफ आई वाज इनटू डांस आई वांटेड टू लर्न a classical dance form. Right. And हम because we live in South Asia, we live in Pakistan. So उससे जो बहुत close था North Indian dance form was my art, जो मैं अभी सीख रही हूँ कथक. Right. जो मैं सीखना शुरू किया मैंने. तो मुझे यही था. And plus हमारे स्कूल में भी लाहौर ग्रामर स्कूल डिफेंस जहाँ पे मैं जाती थी वहाँ पे कथक को सपोर्ट किया जाता था और हमें कथक सिखाया जाता था वहाँ पे पर ऑब्वियसली उस वक्त कोई सही तरह से सीखता नहीं था. Right. तो इसलिए एक दिल में था कि I want to properly learn this, you know. I want to be a dancer. I thought I was always a dancer. But आपको जब एक चीज को अच्छी तरह से सीखते हो ना, if you are in love with something, so you have to be just and fair towards it. Do you think ये school के through was basically when you got the platform to basically identify अच्छा Kathak is there and this is your ultimate calling? So do you kind of like give your school some credit for that? I would definitely give my school credit for that. And क्योंकि जब आपकी popular imagination में एक चीज reinforce होती है, you know, तो आपको एक रहता तो है वो at the back of your mind. और मुझे उस वक्त भी I was really into dance. But schools का एक है extra curriculars तो वो कर देते हैं ऐड बट उस पर कुछ प्रॉपर फोकस नहीं होता. राइट. एंड दैट आई वुड से हमारी सोसाइटी का मसला है वो. दैट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम दैट वी हैव हियर कि हम डांस और क्लासिकल आर्ट्स को सपोर्ट नहीं मिलते हैं. पेरेंट्स भी हमारी साइकी
बिकॉज ऑफ पूरा जो हमारी हिस्ट्री रही है, जैसे मैंने बताया, ज़िया पीरियड और एवरी सब कुछ, तो वो उसका सोसाइटी का भी बहुत बड़ा मसला है. अच्छा, सो मोमिना, आई नो कि आपकी जो ट्रेनिंग रही है वो काफ़ी वेल नोन क्लासिकल डांसर जो फ्रिटर्निटी में जिनको माना जाता है, नाहीद सिद्दीकी हो गई, जैसे कि यू स्टार्टेड योर ट्रेनिंग अंडर हर सुपरविजन और इस टाइम पे आप सुजाता बैनर्जी की ट्यूटलेज सीख कर रही हो, जो कि कथक माइस्ट्रो हैं लंदन में. तो उस टाइम पे अगेन मैं बार बार उस टाइम इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज व्हेन वी वर यंग, प्री टीन्स में, टीन्स में, उस टाइम पे कथक का इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं थे, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, इंस्टाग्राम तो उस टाइम पे बहुत नया नया आया था. अब तो इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत ज़्यादा रीचेबिलिटी हो गई है. तो हाउ डिड यू डिस्कवर नाहीद जी और यू नो एंड नाउ सुजाता बैनर्जी? सो इसकी क्या आपकी जर्नी रही है? So I come from a very conservative family. मैं बहुत conservative family से आती हूँ. मुझे कभी डांस करने से घर के अंदर रोका नहीं गया, कभी भी, ये मैं कहूँगी. एंड आई हैव वेरी लविंग फादर. सो उस तरह से तो ही वाज वेरी सपोर्टिव कि अगर मैं घर तक करूँ, और ऑब्वियसली अगर शादियों पे भी जा रही हूँ तो ऑल गर्ल्स हो, सेग्रीगेटेड हो, यू नो अबाउट इट, राइट? एग्जैक्टली. बट नो, कोई उस तरह सपोर्ट नहीं करता. मोस्टली माई फैमिली बीइंग ऑल्सो वन ऑफ दोज फैमिलीज कि मैं प्रोफेशनली एक क्लासिकल डांसर से सीखने जा रही हूँ. सो एंड दे वुड नॉट वांट मी टू परफॉर्म. मतलब परफॉर्मेंस के साथ भी एक स्टिग्मा बहुत होता है ना. वो डायरेक्टली कभी उस तरह नहीं हुआ, बट देयर इज अ स्टिग्मा, ठीक है, जो कि व्हिच इज ब्रश्ड अंडर द कारपेट के इतना ज्यादा बोलो मत, इसके बारे में ये ना करो. तो वो रहा है. बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप बचपन से जाओ. एंड लाइक मोस्ट पीपल है, मोस्ट फीमेल्स एंड मेल्स ऑल्सो, बचपन से हमें नहीं सिखाया जाता. यहाँ जो मैंने अभी बात की थी पहले ना, तो जब मैं when I was 18, I was going to college. उस वक्त तक my father had given me this freedom that I wasn't answerable to anyone, you know, कि मैं घर में किसी को बता के जाऊं, because मैं कॉलेज जाती थी, then I could do whatever I want उसके बाद. So I started right before my college, in my summer break after A levels. I started going to नाहीद सिद्दीकी क्योंकि उस वक्त वो ही दे रही थी lessons जिम्बरी में, and I actually loved her. I fell in love with her. Her way of teaching, जिस तरह वो intricate चीज में जाती थी, postures के बारे में history बताती थी, and also I loved her dancing because आप YouTube पे जाओ, आप कथक लिखो in Pakistan, she's the first person who comes there. Right. Because भुट्टो period में वो पूरा अपना show करती थी. Right. पायल, जो कि folk dances, classical dances सारे आते थे. And then it was banned during Zia period. Yeah. So Momina, when you started expressing your love for performance art and of course your love for Kathak dancing, तो आपकी family को कितना time लगा इस चीज की acceptance के लिए कि now, मतलब back in the day, till date now, क्योंकि अब तो of course everybody knows who you are and you are gaining a lot of. I don't think. No, I think so because now when it's we my write work. I focus on the work. Yeah, so that's what I'm trying to ask you. Like, how did you manage to get the family acceptance then? Did it come slow? कभी family ने कभी कोई discouraging remarks दिए हों, कभी कुछ कहा हो कि ये मत करो, family it does not look decent, because यहाँ पे decency की word बहुत use किया जाता है. I think that our families are a reflection of the culture, of the current culture, and the society that we live in. तो आप family को तो आप करते हो, but then when I started teaching in schools and all of, you know, बाहर जाने लगी देखा, तो schools में भी यही है. lot of people say, if for example, मैं एक दफ़ा एक स्कूल में पढ़ा रही थी डांस, क्लासिकल डांस, एंड मुझे लगता है कि बच्चों को परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज आई फील लाइक दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स, बिकॉज वो उससे सीखते हैं, परफॉर्मेंस से. परफॉर्मेंस एक डायलॉग क्रिएट करता है, ठीक है, विद द ऑडियंस. आप एक मैसेज लेके जाते हो, एंड इट हैज टू स्टर समथिंग अप इमोशनली इनसाइड द ऑडियंस, राइट. तो जब मैंने वो देखा, बहुत सारे पेरेंट्स कहने लगे कि वी डोंट वांट our girl to perform. Right. And even though आप सोचो कि सिर्फ all girls school है, and it was not for the parents, only for the school students. उनको मसला था कि मेरी बेटी स्टेज पे जाके
परफॉर्म कैसे करें, बिकॉज परफॉर्मेंस गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड इट गिव्स यू अ वॉइस. Oh my. So Right. subconsciously they did not want their daughters to have a voice. I'm sorry I'm saying this, but that's the No, truth. but that is something which You we know? all need to know as Yeah, well. we live in a very patriarchal society, very Right. very patriarchal. तो मोमिना ऑफ कोर्स जिस तरह अभी आपने खुद मेंशन किया कि यू हैव टॉट इन स्कूल्स, काफी ऐसे टीचर्स हैं जो कि एक्चुअली दे, आई मीन आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जो कि टीचर्स हैं, जिन्होंने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब बयान की हैं कि दे आर ऑफ कोर्स अंडर पेड, ओवरवर्क. एंड डांसिंग जो सिखाती हैं, जो बेसिकली डांस टीचर्स होते हैं, उनको काफ़ी दफ़ा इस तरह के बैक हैंडेड फिजिक्स के, साइंस के, ज्योग्राफी, मैथ के एक्सेप्टेड कोर्सेज के टीचर्स ये कमेंट्स मारते हैं कि नाचना गाना कौन सा कोई काम होता है, इट्स नॉट इवन अ कोर्स. सो वर यू एवर लाइक सब्जेक्टेड टू सच बैकहैंडेड कमेंट्स बाय पीपल इन द फैकल्टी और जस्ट इन जनरल? Not in the faculty, I wouldn't say. But generally थोड़े issues होते हैं, mostly तो parent body के issues थे, because they Right. didn't know. And also because the schools are a business as well, you know, teaching जो हमारी education, most of them, some of them are very ethical. They have an ideology. The rest also because parents demand that they want glitz and glamour, right? So even in the performances, they want glamour. So जो चलता है, for example, a lot of schools have even introduced Bollywood songs in their curriculum. उनको वो भी singing class में वो भी हो रहा होता है, which is not bad, which I feel like you should be relevant and बच्चों को सिखाना है तो आपको जो आज उनके चल रहा है उनके इर्द गिर्द उसको भी you have to reach out to that as well. Yeah. But थोड़े principles को तो आप करते हो ना. Yeah. You should abide by certain principles because they have to learn something as well at the end of the day. True. You know. Yeah. तो मोमिना, of course, like you've spent some time in schools and everything, and आप SOAS से पढ़ कर आए. How was your journey? Because you know, I mean, of course, like you and I, we came from the UK, और हमारा जो हम लोग खुद भी discuss करते हैं, why did you come back? Is the biggest question जो हमसे हमेशा पूछा जाता है. So my question to you is, I know it's a big pet peeve. Why did you come back? I came back because I wanted to actually dance here and do theater here and get to know the people that I live here with. Yeah. जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मैं उनके लिए थिएटर करना चाहती थी. मैं अपने तब नाहिजी भी इधर थी. Right. तो मैं अपने उस्ताद से सीखने भी आई थी. मैं यहाँ पे ज्यादा इन डेप्थ सीखना चाहती थी. Yeah. और परफॉर्म करना चाहती थी. पता है यहाँ पे ब्लैंक कैनवस है, कोई है नहीं उस तरह से, बट वी कैन create something Right. out of it. Right. Was it difficult for you, Momina, when you came back to kind of like reroute yourself back in the country? Because जब, for example, काफी students जो बाहर से आते हैं, उनको एक वो a part of them is here, but a part of them is there. वो थोड़ा सा alienated feel करते हैं, क्योंकि हम जब वापस आए, मेरे सारे friends की शादियां हो चुकी हैं, and I'm sure your friends have gotten married, they've got kids. ये बहुत कम हमारे friends रह गए हैं जो कि अभी भी bachelorettes हैं या bachelors हैं, for example, right? तो दोबारा से अपनी niche ढूंढना, दोबारा से अपनी एक identity पाकिस्तान में बनाना, how was the journey for you? It was very hard because I always knew that I wanted to dance. I always knew that I wanted to be a classical dancer. But और मैं चाहती थी कि मुझे पता था कि मैंने performing arts में ही जाना है. Yeah. पर मुझे था कि चलो इसको earning तो इससे नहीं होगी ना. Yeah. इसको मैं साइड पे करती जाऊँ. But I could never have the courage to go out there and see कि मैं ये डांस सिखाती हूँ या ये करती हूँ. That I finally said in COVID. Yeah. COVID से एक हफ्ता पहले I just let go of my job that I was doing. I was working as a researcher. ठीक है. So I said I don't want to do that because मुझे time नहीं मिलता था to come and do my own रियाज, you know, and then you have to take care of yourself also for your body. Yeah. And practice. तो मुझे time नहीं मिलता था. So during COVID I said कि मैं नहीं कर रही. So I took the time in COVID for my to get back to myself and to rethink what I wanted to do. And I just knew that I wanted to dance. Yeah. And मैंने इसी में जाना है. So अब इसमें then teaching is the best way forward in dance. It gives you experience, you teach other kids, and it taught me a lot. And I taught for 4 years in different schools. अच्छा मोमिना, हमारी एक दफ़ा बात हुई थी in private and you were talking about, of course, it is no hidden secret कि हमारे बड़े colonized mindsets हैं. जहाँ हमारी LGS, especially LGS थोड़ा सा soft target होता है क्योंकि LGS के ऊपर memes ज़्यादा आती हैं, you know, about the English nature of the school. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मम्मीज़ होती हैं, उनको होता है कि हमारे बच्चे
बैले ज़्यादा वो फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू कथक. तो इसका मुझे थोड़ा सा बताओ कि लाइक वाज देयर एनी incidents where you thought कि like Yeah. There have been a couple of incidents where parents would mostly support ballet. yeah And because ballet mein they wear really elaborate dresses, Yeah. which is really nice, which they should. And they would be a little discouraging of Kathak because उसका stigma आ जाता है साथ में घुंघरू और घुंघरुओं का. तो और अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं encourage करूँ बच्चों को, and I feel like उनको शुरू दिन से घुंघरू दे दो, और छोटे-छोटे बच्चे हैं, 7-8 years. yeah तो अगर उनको आप tutus दे रहे हो वो उसके ballet के, so why not घुंघरूs for Kathak as well? yeah But this would be discouraged because one parent even came up to me and she said, नहीं, ये तो Indian है ना, तो my husband does not allow my daughter to do this. Do you think घुंघरू की अभी भी जो nexus है वो कोर्टिसॉन पीरियड के साथ जाता है? कोर्टिसॉन पीरियड था भी कथक का, बहुत चीजें उसमें आई, Exactly. but it wasn't जो हम समझते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था. Yeah. ठीक है, they were very respectable women actually, and they were performers of their time. Yeah. So ये बहुत ही colonized mindset है हमारा कि हम, I'm not discouraging ballet. Ballet is an excellent art form and I think it should be taught. But उसी के साथ why do we discourage something जो हमारे अपने region में पैदा हुई है, जो हमारे region में it came into being? That's Exactly. what I don't understand. Yeah. Do we hate ourselves that much? काफी दफा मैंने ऐसे सुना है कि जो अभी हमने घुंघरू की बात की थी कि एक दो दफा ऐसा हुआ था कि मैं इवेंट पे गई थी तो I heard like a couple of boys say कि घुंघरू तो तवाइफ पहनती हैं. Yeah. Even at LLF once, Yeah. Shima Kirmani की performance थी. Yeah. And she did a beautiful performance. And then when I came out, I heard a couple of guys or men talking about it as कि performance देखी थी, like बहुत बुरी तरह से. And I got pretty angry at that actually. Yeah. तो मोमिना, जब mothers आती हैं और जब mothers आपको, क्योंकि they confide in you and they're like, if fathers do not want to see their daughters on the stage, तो how do you convince the mothers? What happens there? I did not convince anyone actually, but I Right. just told them that I think they'll learn a lot. And then I tried to say that it's part of our culture also. It's not only Indian, or it's not only, it's not theirs, it's ours also, because our history is also part of their history. So Momina, of course, as your friend, I know how passionate you are about your art, and I know you never even considered it work, you consider it art, your art. अब जाके ज़माने में क्या हो रहा है कि आपका जो अपना art है वो commercialize होने लग गया, and of course you have to sell yourself on digital platform in order to get some recognition, right? You have to constantly produce content. What is your idea about becoming commercialized and the fact कि like अब commercialize होए बगैर आपकी कोई recognition नहीं है, कोई value नहीं है? What do you have to say about that? I didn't want to commodify myself. In order to connect with other people, you need to be relevant also. Yeah. So it's sort of like field work. जब आप एक field work करते हो, जैसे आप thesis करते हो, तो आप engage करते हो with the people on the field, right? आप उनको जाके बताते नहीं हो. This I learned from teaching in schools. कि आप जब जाते हो, और even my theater की चीजें जो करती हूँ अपनी, कि आप जाते हो, आप उनके साथ engage करते हो, right? You learn something from them, but you don't go and tell them that this is right. First you engage with them, then you bring something that you want to teach them or you want to tell them. So it's a way of teaching also, and it's a way of engagement, I would say. एक dialogue create होता है. So instead of just saying commercialization, I would say it's also creating a dialogue. तो मोमिना, अभी आपने बताया कि आप थिएटर का भी पार्ट रहे हो, एंड आई नो कि इसमें आप पंजाबी को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रेफरेंस देती हो, पंजाबी वर्नाकुलर को, पंजाबी डिस्कोर्स को, और Punjabi in itself ko you want to revive, like your theatre. Actually, I've loved Punjabi poetry since I was a young kid because of my father. तो मुझे अब्बा हमेशा से सुनाते थे. We went to Faiz Mela once, and वहाँ पे we saw एक theatre हो रहा है, and it was in Punjabi. वहाँ हीर रांझा के पूरी जो verses थी वो recite हो रही थी. Right. So I got really intrigued by it, and I wanted to be part of it. And जब मैंने जाके देखा तो वो poetry के साथ ही, पोइट्री के साथ ही वो प्रॉपर थिएटर हो रहा था. That's just my love, because I love connecting with people. आपको क्या लगता है कितना और टाइम लग जाएगा पंजाबी को उस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए, क्योंकि अभी भी हम लोग एक कॉलोनाइज माइंडसेट में रहते हैं जिसमें हमें बड़ी शर्म आती है पंजाबी बोलते हुए या उर्दू बोलते हुए. हम लोग कोशिश करते हैं जितना इंग्लिश. Exactly. So what is your feedback, लाइक कितना हमें टाइम लगेगा? जब तक घरों में नहीं शुरू होता, बिकॉज हमारे अपने घरों में नहीं सपोर्ट किया जाता. We are
told to talk in English ताकि हमारी अंग्रेजी बेहतर हो जाता. ठीक है, बल्कि उर्दू भी काफी जगहों पे नहीं होती है. ज्यादा अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी में ये करो, इंग्लिश में करो. तो जब तक स्कूल्स में मुझे पता है, लॉट ऑफ पीपल टुक द इनिशिएटिव ऑफ टीचिंग पंजाबी, बट पेरेंट्स केम फॉरवर्ड एंड दे सेड कि हमें पंजाबी नहीं करानी स्कूल्स में. बहुत ज्यादा मुझे मेरी टीचर्स मुझे बता रही थी, मुझे बताया हुआ है कि ये होता था, उनके पास कंप्लेन्स आ जाती थी. So certain schools took a stand for that and certain did not. You have a performance on YouTube as well जो आपने ओलो मोपोलो के through भी की थी, and that was a stunning performance and that was a single performance. Yeah, Are you still a part of the colony or ओलो मोपोलो अभी till date? Yeah. How was your experience with them? I've started my classes. Yeah. Personal Kathak classes, classical and semi-classical. Amazing. At Olo Mopolo. Right. And I'm pretty excited about that. And I love my students who've just enrolled for that. मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ. Right. Because पता है, especially females and also males. Yeah. उनका डांस का नहीं है. उनको कोई डांस की सपोर्ट ही नहीं मिलती. हमारे जो सोसाइटी है, they can't see a woman's body moving freely. Exactly. They always wanted to be coy, a little bit inward, not outward. Yeah. And also the same goes for men. उनको हमने एक अलग तरह से कैद कर दिया है. Yeah. और डांस, एक आदमी को भी डांस कराना या देखना बहुत मुश्किल काम है. एक्सेप्टेंस बहुत कम है इस तरह. I know so many male dancers जिनको नहीं एक्सेप्टेंस मिलती, जिनसे बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं उनको होती हैं. So it's difficult for both. Bollywood dancing versus semi-classical dancing versus proper कथक dancing के बीच में distinction या difference का इतना idea नहीं है. तो ये जो confusion है इन तीनों genres में, what do you have to say about that? Semi-classical dancing और कथक, that is, I would say it's थोड़ी सी misrepresentation, बहुत misrepresentation हो रही है कथक की. Because it's not Kathak. Yeah. And it's mostly, I would say, it's Bollywood. And it's great. It's amazing. But then I would say it's not really, Kathak or classical dancing, actually. Right. And in order to do semi-classical dancing, you also have to be trained in classical, in a classical dance form. Yeah. So, ho raha hai, but then again, I love it. I think इस तरह होना चाहिए और बहुत ज़्यादा, because people should come out and express themselves. But then again, थोड़ा सा misrepresentation से मुझे मसला होता है. इस misrepresentation के बारे में जो अपने आप को semi-classical dancers या Bollywood dancers as pure Kathak certified dancers claim करते हैं, how do you feel about that? I would say it's very problematic also. बहुत problematic बात है एक angle से तो, क्योंकि वो dancers, खासतौर पे classical dancers, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र अरसा इसके ऊपर एक गुजारा है, अपना एक खून पसीना इसके ऊपर एक किया है, पैसा लगाया है इस चीज, अपनी रिसोर्सेज भी, पैसे से ज्यादा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम इसको दिया है. तो उसकी बहुत क्लासिकल डांस की बहुत मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, बिकॉज आवर सोसाइटी इज ऑलरेडी ग्रोन ऑन बॉलीवुड एंड जो भी हमें टीवी पे दिखाया जाता है, और क्लासिकल डांस फॉर्म की तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, एज आई सेड. ठीक है, बहुत देर से. तो वो फिर लोगों को लगता है कि कथक में भी ना दे मिस द मिर्च मसाला इन इट. राइट. मोमिना, काफी हद तक क्लासिकल डांसिंग की एक फॉलोइंग भी जनरेट हो रही है. देयर आर पीपल जो कि कथक को बहुत ज्यादा उस लाइन को परस्यू करना चाह रहे हैं. पिछले when you were in your teens, right? और अब जाके when you have like a 14 year of experience now, do you think पाकिस्तान में, especially because हम लाहौर में हैं, do you think कि metropolitan cities में भी अब awareness आ रही है towards कथक dancing? I would say that here, because इतना हमारा माशरा repressed रहा है फेस्टिविटीज के हवाले से. बसंत बैन हो जाती है, ये सारी चीजें बैन हो जाती हैं, तो हमारे माशरे में एंगर और फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है. So we need to have these performances and ये छोटी छोटी फेस्टिविटीज जो ज्यादा म्यूजिक एंड आर्ट को, डांस को और थिएटर को हमारी ज्यादा फोर फ्रंट पे लाती हैं, एंड पीपल गेट टू पार्टिसिपेट इन दैट. उनकी कोई फिजिकल एंड मेंटल एंगेजमेंट होती है, और जिससे वो कुछ सीखते भी हैं. काफ़ी ऐसी परफॉर्मेंसेस हुई हैं मोमना जिसमें क्लासिकल डांसर्स स्पेशली जो ओपन फील्ड्स में परफॉर्मेंस करते हैं, या काफ़ी ऐसी जगहों पे भी परफॉर्मेंस करते हैं जो कि ऑफ कोर्स एक विद इन द बिल्डिंग हो रही होती है वो, लेकिन दे आर समटाइम्स अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल कमेंट्स, और काफ़ी लोग जो होते हैं वो उस तरीके से ना थोड़ा सा
नर्वस हो जाते हैं कि दे डोंट वांट टू बेसिकली परफॉर्म इन पाकिस्तान बिकॉज जो उनको फीडबैक मिल रहा होता है, ये डिरोगेटरी कमेंट्स उनके पास आ रहे होते हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? कथक का यहाँ पे स्कोप अभी तो बहुत ब्लीक है. आई एम सॉरी टू से, बहुत दिल दुखता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज स्कूल्स में भी, एक स्कूल में मैं ये आपको बोलना चाहूंगी कि मुझे कहा गया था कि आप कथक ना कराएं, मत कराएं वहाँ पे. And they wanted to do other forms of dance, you know what I mean? Which is great, but why not Kathak? Why not a classical dance form that is ours? Yeah. उनको ज़्यादा वो चाहिए होता है कि जहाँ से उनको प्रॉफिट आता है. You know what I'm saying? Mostly. And मुझे ये से कहा गया था कि कथक नहीं करना. Then I told them that I am a Kathak trained dancer. Yeah. The classical dance element would come into my dancing. वो तो आएगा. I'm sorry. They wanted anything that perhaps sells, I think. I'm not going to name any school, but मैं बहुत जगहों पे देखती हूँ कि वो कथक करा रहे होते हैं. एक स्कूल में तो कथक क्लास का भी था. But when I saw the video or pictures, video actually, so they were dancing to Ghar Bhore Pardesiya, which is a Bollywood representation of Kathak, but I wouldn't say it's Kathak. I'm sorry to say. और ये वो आर्ट है जिसमें आपने शुरू के सालों में सिर्फ देना ही देना, लेकिन इसका प्रॉफिट टर्नओवर, especially no, I'm not talking about women from privileged class. I'm talking about women who love this work, but उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट इसमें की होती है, लेकिन उनके लिए इनका ब्रेड एंड बटर है. लेकिन उसका टर्नओवर आने में व्हाट डू यू थिंक इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान कितना टाइम लग जाता है? या इट्स प्योर लक, या कभी कभार टर्नओवर उसका नहीं भी आता? Classical dancers are very underpaid here. Actually, all dancers. Do you think trends are changing somewhat? But there is hope. I would say definitely hope तो है. काफ़ी ऐसे उस्ताद होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को अपने से आगे निकलने नहीं देते. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बिकॉज आपके खुद के उस्ताद रह चुके हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन बहुत सारे we've seen the videos. So is it true कि उस्ताद शागिर्द का रिलेशनशिप एक्सप्लॉइट करता है और ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें उस्ताद हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द शागिर्द? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? ये रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमैटिक रहा है बिकॉज पहले ज़माने में ये होता था कि आप उनके साथ रहते थे, अपने उस्ताद के साथ, तो वो रिलेशनशिप गिव एंड टेक का होता था. इट वाज अ रिलेशनशिप ऑफ लव एंड नरिशमेंट. अब बिकॉज आप यू पे एंड यू गो, so there's a sort of different angle to it, especially in Pakistan, I would say, because इतनी recognition नहीं है, and most of the artists are unfulfilled here. You know? तो मोमिना, काफ़ी ज़्यादा ऐसे अब परफॉर्मर्स है जिन्होंने अपने उस्तादों के बारे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके बोला कि उनके उस्ताद उनको बहुत सालों तक रोकते रहे हैं कि अपना काम नहीं ऑनलाइन लगाना, या उनकी इजाज़त के बगैर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे. लाइक इट वाज लाइक अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विच नेवर एग्जिस्टेड बिकॉज द उस्ताद हैड कंप्लीट ओनरशिप ओवर द स्टूडेंट. डू यू थिंक ये अभी तक चीज़ एग्जिस्ट करती है? जब आपके साथ एक उस्ताद जेनरस होता है ना, या आपको प्यार से सिखाता है, the shagird, the student can feel it, and I do feel that. True. And I love it. I'm in love with it. Right. Momina, thank you so much for being a Thank part you. of my podcast. I had an absolutely amazing experience talking to you. It was so much fun. मैंने जितना अब आपसे सीख लिया ना about your journey, about, and I'm pretty sure that all those people, especially dancers, जो budding artists हैं, performers हैं, जिनके पास platform नहीं है, they have an idea where to start and how to start. So ladies and gentlemen, this brings an end to my wonderful podcast. Anything is Poddable with Fatemah Abbas. I hope that you love this episode, and I hope that you end up loving Momina. So thank you so much for being a part of it, and I will see you all soon. Bye bye.